So, first of all, I would like to know that yesterday, when you all of you were done with the session, तो कितने लोगों में से आप लोगों के पास ये कैफियत आई कि सर उनका थोड़ा सा भारी लग रहा था और सॉर्ट ऑफ ऐसी कैफियत के यू नो या नम या डल या कोई भारीपन आप लोगों में से किसी को ये फीलिंग हुई है कल after the session ended to the audience? Yes, no, sir. We felt relaxed. Okay. Okay. Great. Great. Anyone else? कुछ भी different feel हुआ you can express in words. So Sobia Aftab just shared her feeling after the session. She's saying that I was feeling relaxed and lighter. Okay. And Great. Family 2 is saying that I was quite relaxed after the session. Thanks a lot. Great. Great. Okay. So the reason I asked this question is because होता क्या है कि जब भी आप कोई ऐसी इंफॉर्मेशन हार्नेस करते हैं या इंजेस्ट करते हैं जो कि नए रजिस्टर क्रिएट कर रही होती हैं इन योर सबकॉन्शियस, तो आपको 3 या 4 किस्म की डिफरेंट फीलिंग्स हो रही होती हैं। उसमें से पहली फीलिंग ये है कि आप को थोड़ा सा अपना आप डल महसूस हो रहा होता है, और डल इसलिए महसूस हो रहा होता है जैसे आप जब काम करते हैं आपको थकन सी महसूस होती है कि यू हैव डन समथिंग। Some people feel relaxed, that they feel lighter, right? On the contrary, because कोई ऐसी perplexity, कोई ऐसे loops होते हैं जो कि उनके subconscious में चल रहे होते हैं काफी अरसे से, और जब वो उसकी knot untie होती है तो they feel relaxed, they feel lighter. कुछ लोग होते हैं जिनको सर में दर्द सा महसूस हो रहा होता है, and this again happens because it might not clear the knot जो कि पहले से बंदी हुई हो, या पहले से कोई मुश्किल आ रही हो, बट कोई नया कॉन्सेप्ट रजिस्टर होता है तो आपके जो ब्रेन मसल्स हैं उसको दोबारा काम करना पड़ता है। सो उसकी वजह से आपको थोड़ी सी वाली फीलिंग हो रही होती है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जब आप लोगों ने कभी वॉक की होगी, ज़्यादा वॉक कर लेते हैं तो आपको मसल्स में स्टिफनेस महसूस होती है, मसल्स में टायर्डनेस महसूस होती है। उसकी वजह कि मसल्स ने काम किया होता है। सो और फिर नए जो मसल्स हैं वो एक्सपैंड होते हैं, बढ़ने की तरफ जाते हैं। सो न्यूरोट्रांसमीटर्स वर्क्स इन द सेम वे, इन द सेम फैशन। हमारा जो ब्रेन है, द हाइपोथैलेमस, ये जो है इट वर्क्स इन द सेम वे। ये आगे जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है या ये आगे एक्सपेंड करता है, एंड सो फोर्थ। सो पूछने की वजह ये थी कि अगर ऐसी कोई वो हुआ हो, सो इट मीन्स दैट यू आर इन द राइट डायरेक्शन, यू आर गेटिंग द कॉन्सेप्ट्स। नाउ आज हम वो करेंगे, आई होप दैट यू कैन सी माई स्क्रीन, माइंड बॉडी कनेक्शंस। नाउ our goal in mind body connection would be to the identification and elimination of irrational beliefs to cultivate fairness and impartiality in the criminal justice sector. Obviously बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। I mean, I believe that you would be doing it already unconsciously, because as you know that you have to be unbiased, और आपका unbiasedness show भी होना चाहिए during the practice while you are preaching the or so I was referring to the identification and elimination of irrational beliefs, that you have to be very impartial. You would be doing it consciously already. However, हमारी यानी कि हम एक तो शो कराते हैं कि हम बायस नहीं हैं, बट जो हम इनपुट ले रहे होते हैं अनकॉन्शियसली, ये हमारे ऊपर असर, अगर हमने इसके पेरीमीटर्स नहीं डिजाइन किया हुआ, इसका कोई स्टेंसिल नहीं डिजाइन किया हुआ, तो ये हम पे असर करता है। और उसकी वजह से हम किस तरीके से उस पूरे कॉन्टेक्चुअल केस को ले रहे हैं, इट टोटली इफेक्ट्स ऑन दैट एज वेल, व्हिच मींस दैट इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो difference between a rational belief and irrational belief, right? So we'll be exploring that today. So first we'll talk about thoughts.
So thoughts are mental cognition, ideas, opinions, and beliefs about ourselves and the world around us, right? The thoughts. You remember yesterday भी मैंने आपको thoughts के बारे में थोड़ा सा स्क्रैच किया था. सरफेस के थॉट्स जो हैं ये आप उसको रोक नहीं सकते हैं. ये लाइक नेगेटिव नेगेशन हमारे ब्रेन के अंदर we cannot accept it as a command, right? Like if you remember, I told you that you can't think what you don't want to think without thinking about it, right? और आपको कोई एक छोटी सी एक्टिविटी कराई थी, सबने कहा था कि मॉजुलम ऑफ कायद जो है वो सबके सबकॉन्शियस में इमेजिन हो गया था. सो उसी को हम थोड़ा सा एक्सपेंड कर रहे हैं आज. So thoughts, they include the perspective we bring to any situation or experience that colors our point of view, for better, worse, or neutral, right? Your thoughts are a catalyst for self-perpetuating cycle. What you think directly influences how you feel and how you behave, right? So if you think you are failure, you'll feel like failure, then you'll act like failure, which reinforce your belief that you must be a failure. Which means what? If you remember, yesterday I told you that you are what you see and you are what you eat, right? यानी कि आप जो भी खाते हैं या जो देखते हैं आप वो हो जाते हैं. और खाने से मुराद मैंने आपको क्या कहा था कि यू हार्नेस इंफॉर्मेशन थ्रू वर्ड्स, verbal, what you eat literally, orally, and what you hear. So, these are your perception. Now, imagine करें कि आपका एक केस लगा हुआ है. सो तमाम आप जजेस हज़रात से मेरी ये गुजारिश है कि इसको इमेजिन करें. आपका एक केस लगा हुआ है, कोई अमजद साहब हैं उनके बारे में, राइट? और आपकी पहली हियरिंग है. और इस पहली हियरिंग से पहले आप घर से निकल रहे हैं. लेट्स से घर में ही वो केस थोड़ा सा मशहूर हो गया फॉर वट एवर रीजंस. उसके अभी कोई एविडेंसेस नहीं आए, लेकिन घर में ही सबसे पहले वो ऐसी वर्बली डिस्कस हुआ. एंड देन you got the input that what, I think Amjad is guilty. And then you came to the office and someone discussed with you over there, we think that Amjad is guilty, and someone else as well, and then someone else as well, and now you are doing the session in the court. Now my question to you is that on the fairness, how many of you will have its effect, यानी कि उसका स्टेंसिल आप उसके गिल्टी होने से स्टार्ट कर रहे होंगे अनकॉन्शियसली. I know that you would not be doing it consciously, you would not want to do it consciously, but unconsciously, how many of you would be, unconsciously you think that you would be doing it? जी सर, पहले जब ज्वाइन किया था जुडिशरी में, जब आए थे जी, तब जी, तो जी. ये वो एट वंस हम यही माइंड में कर लेते थे कि ही इज ए गिल्टी पर्सन. लेकिन फिर Right. एक स्टडी मैंने मेरी नज़रों से गुजरी जिसमें कहा कि जज को इन्फ्लुएंस करने के तरीक़ेकार होते हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन चाहे गलत हो या सही हो, वो जज के माइंड में लगा, वो टिल एंड वही एग्जैक्ट रहेगी. वो स्टडी करने के बाद अब माइंड क्लियर हो गया कि चाहे कोई कितना भी कहे उस पर रिलाई नहीं करना है, जो एविडेंस सामने आएगी उसी पे रिलाई करना है. परफेक्ट, थैंक यू सो मच फॉर योर ओपिनियन. एक और रेज हैंड भी हुआ है हमारे पास. हाँ सर, इट्स अ नेचुरल फिनोमेनन. क्योंकि ये एक जो है इंफॉर्मेशन जो भी आती हैं, और स्पेशली सोशल मीडिया है या प्रिंट मीडिया है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, एनी हाई प्रोफाइल केस, उसमें विदाउट रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस ये एक नॉर्मल बिहेवियर होता है. जज ये फील करता है कि ही मस्ट बी गिल्टी और ही मस्ट हैव डन समथिंग रॉन्ग, और जो मतलब है अनलेस एंड अनटिल जब तक एविडेंस नहीं आ जाती है या जब तक डिसीजन तक पहुंचने के लिए जो सारा वो ट्रायल कंक्लूड नहीं होता है, इन बिटवीन ये सारी चीजें माइंड में होती हैं और माइंड को इन्फ्लुएंस कर रही होती हैं. बट इन द एंड जब आपको वो सारी डिसीजन मेकिंग के लिए आपको लॉज और उसके थ्रू आप चाहते हैं, एविडेंस के थ्रू स्पेशली जो रिकॉर्ड पर आई होती है, तो जज इज बाउंड बाय द एविडेंस. और समटाइम्स हमें मालूम होता है कि ही इज गिल्टी, बट
no, there is no any such evidence, or witnesses did not give evidence as required by the law, so the judge cannot do anything. बट आप सही कह रहे हैं कि ये जो है एक प्री ट्रायल जो स्टेजेस हैं उनमें ये सारी चीजें बिल्कुल Exactly. इन्फ्लुएंस करती हैं जजेस को. Perfect. I'll take one more थैंक यू sample. सर. अच्छा, मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है कि बिलखुसूस वो लोग लाजमी आज पार्टिसिपेट करें इन द डिस्कशन जिन्होंने कल नहीं किया था. जिन्होंने कल किया था वो भी करें, लेकिन जिन्होंने कल नहीं किया था बिलखुसूस वो भी करें. आपके पार्टिसिपेशन से यू वुड लर्न मोर. आप जब खाली सिर्फ सुन रहे होते हैं तो आपको लग रहा होता है कि कॉन्सेप्ट्स बैठे हैं, बट व्हेन यू एक्चुअली पार्टिसिपेट एंड डिस्कस देन यू आर गेटिंग देयर, एज फार एज द context there. So, I'll take one more sample. Someone. हमारे यहाँ कानून में ये कहा जाता है कि जो अक्यूज होता है वो ही इज अ फ्रेंड ऑफ कोर्ट. तो हमारे जहन में अब ये बिल्कुल भी नहीं आता. शुरू से जो पढ़ा है यही चीज़ पढ़ी है कि ही इज़ द बेस्ट चम ऑफ द कोर्ट, ही इज़ अ फ्रेंड ऑफ द कोर्ट. तो उसके बारे में हमारे अंदर कहीं ना कहीं ये चीज़ होती है कि उसने कुछ नहीं किया. अनलेस अंटिल एंड अनलेस ही इज़ प्रूवन गिल्टी, ही और शी इज़ प्रूवन गिल्टी, तब तक हम ये बिल्कुल तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि उसने वाकई कुछ किया हुआ है, या उसके साथ हमारा ट्रीटमेंट ऐसा होना चाहिए कि उसको ये फील हो. तो इस वजह से और वैसे भी जज को तो हमेशा न्यूट्रल ही रहना चाहिए. बिल्कुल ठीक है. और बिल्कुल ठीक है. इतना सा मतलब हो चुका है 5-6 साल काम करने के बाद, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं इस कुर्सी पे बैठने के बाद, काफ़ी चीज़ें ऐसी जो आम बंदे को समझ में नहीं आती वो एक जज को समझ में आ जाती हैं. काफ़ी चीज़ें किसी इंसान का जो पोस्चर है, जो उसकी बॉडी लैंग्वेज है, उससे भी काफ़ी चीज़ें समझ में आती हैं. Perfect. और अल्लाह की Thank you तरफ से so. ठीक चीज़ होती है. बिल्कुल सही है. थैंक यू सो मच मिस फहमिदा, एंड थैंक्स एवरीवन एल्स. अच्छा देखें, आप लोगों ने बिल्कुल अपने जो व्यूज शेयर किए, एंड आई वुड एग्री टू यू गाइस दैट आपको काफ़ी हद तक आपका एक स्टेंसिल बन चुका होता है, in majority of the cases. So in majority of the cases you would be doing okay. But however, एक ओपिनियन है कि प्री ट्रायल हल्का सा ये आपको इम्पैक्ट करता है ना चाहते हुए. और इसकी देखिए बहुत सिंपल सी रूल है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, बिकॉज यू आर जज बट यू आर ह्यूमन एज वेल. ठीक है, आप इंसान हैं, तो इंसान पे लागू होने वाली तमाम कैफियत आपके ऊपर आएंगी, whether someone's like the fact or not, but you are human, number one. Excuse me. Which means that हर वो कंडीशन जो कि मैं एज बेहतर इंसान जो फेस कर रहा हूँगा, वो आपके साथ भी पॉसिबली आ सकती हैं. सर मेरा एक क्वेश्चन था, मैंने जो जी चैट जी बॉक्स में भी लिखा था, आपने जी. कहा था व्हाट यू आर व्हाट यू ईट. इस यू पे आर जरा वट. ज्यादा. अच्छा ठीक है, मैं इसी की तरफ भी आता हूँ. बिल्कुल ठीक है. देखें, ओके ओके. आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, वो आपको क्या कहता है कि आप न्यूट्रिएंट्स लें, आप ये वाले कंपाउंड्स लेना शुरू कर दें. उससे क्या होगा, आपकी जो फिजियोलॉजी है उस पर फर्क, आपकी जो बॉडी है उस पर फर्क आ जाएगा, आपके जो इम्यून सिस्टम है उस पर फर्क आ जाएगा. जो आप खाते हैं, हर वो अपने साथ कुछ प्रॉपर्टीज लेके आता है, कुछ एट्रीब्यूट्स होती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं उसकी. ठीक है, कोई भी ग़िज़ा है. शुगर है, शुगर की एट्रीब्यूट ये है कि वो स्वीट होती है. ठीक है, और उसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि वो फैटनिंग होती है. सो वो आप जब इंजेस्ट करेंगे तो उसके एट्रीब्यूट भी लागू होंगे आप पे, और उसकी प्रॉपर्टीज भी लागू होंगी. इसी तरीके से जब भी हम कोई बात सुनते हैं, हम कोई किताब पढ़ते हैं, हम किसी से मशवरा करते हैं, या हम किसी से बात कर रहे होते हैं, या हम कोई म्यूजिक सुन रहे होते हैं, उसका आपके जो सबकॉन्शियस है उसके ऊपर उसका बिल्कुल वैसे ही असर होता है. उसकी भी कुछ एट्रीब्यूट्स होती हैं और उसकी भी प्रॉपर्टीज होती हैं. और उसकी एट्रीब्यूट्स, फॉर इंस्टेंस, अगर आपने सेल्फ ग्रूमिंग कोई बुक पढ़ी है, लेट्स से कोई टोनी रॉबिन्स की आपने बुक पढ़ ली है, सो उसमें क्या होगा आपके साथ कि यू विल फील एट वन एंड, यू विल फील दैट this is a new way of life, this is how I should be doing, this is what I should be doing it. और उसकी जो कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो आपके पास क्या आएंगी कि आपको ये लगेगा दैट
it might at some time it might make you a bit upset as well that इतनी लंबी जिंदगी में अभी तक आपने ऐसा क्यों नहीं किया, पहले क्यों नहीं सोचा, एंड सो एंड सो फोर्थ, राइट? सो हर चीज जो आप हार्नेस करते हैं उसकी एट्रीब्यूट एंड प्रॉपर्टीज आती हैं। इसीलिए मैंने कहा यू आर व्हाट यू ईट एंड यू आर व्हाट यू सी। सो जो खाना है, खाने से मुराद क्या है? अगेन, जो मैं चीज देख रहा हूं, मैं जो प्रोग्राम देख रहा हूं, मैं जो म्यूजिक सुन रहा हूं, मैं जो खाना खा रहा हूं। एक छोटा सा फैक्ट बताऊं आपको, टीवी पे आप लोग कोई भी चीज देखते हैं उसको हम कहते हैं प्रोग्राम। मतलब हम डिस्कस करते हैं ना कि आज हमने ये प्रोग्राम देखा, आज हमने वो प्रोग्राम देखा। आप में से किसी ने गौर किया कि ये जो वर्ड प्रोग्राम है इसको प्रोग्राम क्यों कहते हैं? आई मीन इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थॉट। किसको प्रोग्राम क्यों कहते हैं हम लोग? टीवी पे आने वाली कोई चीज उसको हम प्रोग्राम कहते हैं, या कोई प्लेटफॉर्म है उसको हम कहते हैं कि आज हमने अच्छा प्रोग्राम देखा, आज हमने अच्छा प्रोग्राम नहीं देखा, इन सेंस ऑफ फोर्थ। इसको हम प्रोग्राम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये निकला है प्रोग्रामिंग से, लिटरली। सो जो भी आप देख रहे होते हैं उसकी सबकॉन्शियस में आपके प्रोग्रामिंग हो रही होती है। एडवर्टाइजमेंट की एग्जांपल ले लें, कोई भी एडवर्टाइज जो है वो बेस करता है फेयर पे, क्योंकि डर एक बहुत अच्छा बिकने वाला प्रोडक्ट है। अरसे दराज से बिकता हुआ आ रहा है और अरसे दराज तक बिकता रहेगा, राइट? तो डर बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, लोग खरीदते हैं इसको। कोई भी एग्जांपल ले लें आप, कोई टूथपेस्ट का आएगा, सो वो आपको बताता है कि अगर आपने हमारा टूथपेस्ट यूज़ नहीं किया तो आपके दांत टूट जाएंगे, या आपको दांतों में कीड़ा लग जाएगा। आपने हमारा शैम्पू यूज़ नहीं किया तो आपके बालों को नुकसान होगा, अगर आपने हमारी क्रीम यूज़ नहीं की तो आपके स्किन को नुकसान होगा, एंड सेंस ऑफ फोर्थ। बिहाइंड द सीन एक ही चीज़ होती है, डर, और ये आपका प्रोग्राम कर रहा होता है। एंड जब भी आप शेल्फ पे जाते हैं, वो जब आप उसको देखते हैं तो वो ट्रिगर होता है पूरा प्रोग्राम, राइट? इसी थॉट को यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है कि जो आपकी जो थॉट्स हैं ये कैटलिस्ट के तौर पे काम कर रही होती हैं। तो आप किसी भी चीज़ से अगर इन्फ्लुएंस होंगे और अगर आपने वो सोच लिया तो आपके ऊपर वो लागू हो जाएगा। तो अगर आपने ये, अच्छा, अब इसमें जो मैंने एग्जांपल दी कि अगर आपने ये मान लिया कि आप फेलियर हैं, तो दुनिया की कोई ताकत, दुनिया की कोई पढ़ाई, दुनिया की कोई चीज आपको नहीं रोक सकती फेलियर होने से। कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि फेलियर अपनी जात में फीडबैक है। फेलियर अपनी जात में फीडबैक है कि मैंने एक काम किया एबीसी स्ट्रेटजी से और ये काम नहीं हो पाया, दैट्स इट। मुझे इसमें से फीडबैक लेना है कि क्यों नहीं हो पाया, एंड इस चीज को, इस पूरे केस को बंद करके साइड पर रख देना है, और उसका फीडबैक मेरे लिए काम का है। तो मुझे ये पता चल गया कि एबीसी इस मेथड 1 से काम में नहीं कर पाया, अब मैं वही काम मेथड 2 से करूंगा, 3 से करूंगा, 4 से करूंगा। जब तक मैंने मान नहीं लिया कि मैं फेलियर हूं, उस वक्त तक मैं फेल नहीं होऊंगा कभी जिंदगी में, राइट? यानी कि विनर और लूजर में बुनियादी फर्क क्या है? विनर और लूजर में बुनियादी फर्क यह है कि विनर एक दफा और ट्राई करता है। That's the only difference between a winner and loser. You try one more time and you become winner, right? And loser, you stop trying. That's the only explanation. This is the most simplest explanation that I can come up with. So ये mind frame इसको जो है ना, ये चीजें प्रोग्राम करती हैं। ये किससे प्रोग्राम होती हैं? आपकी सोसाइटी से, टीवी से, अखबारात से, आपके दोस्तों से, मूवी से, हर वो चैनल ऑफ इनपुट जो आप लेते हैं। So there are always multiple perspectives to any situation or circumstances. By teaching yourself how to change your perspective, you can discover the best way to view situation so that it brings out your best possible self. ठीक है? अगेन वही बात है कि एक ही सिचुएशन के मुख्तलिफ सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं। मैंने कल बताया था कि आपकी हकीकत मेरी हकीकत से मुख्तलिफ है और हमारी हकीकत हकीकत की हकीकत से मुख्तलिफ है, ठीक है? सो इन ऑर्डर टू नो द ट्रूथ, इन ऑर्डर टू नो द रियलिटी, राइट, you have to dig it down, you have to ask questions that matters, right? So अब if you teach yourself how to take different perspective, right? एक बुक है, मैं आप लोग को सबको रिकमेंड करूंगा कि वो बुक पढ़ें, आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी, एंड आप लोग के लिए आई बिलीव दैट इट वुड बी लाइक रियली गुड। बनी अलग पर्सपेक्टिव के लिए, बट यू कैन रिलेट टू दैट टू हैव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। और बुक का नाम है
सिक्स थिंकिंग हैट्स, एडवर्ड डी बोनो की बुक है, सिक्स थिंकिंग हैट्स, ठीक है. इट्स एन अमेजिंग बुक, and basically the idea is कि how you can have six different perspective while you being yourself, you know. So आपको वो काफी perspective building में काफी मदद देती है. So next will come out belief and rational beliefs and irrational beliefs. Now, beliefs are usually created by what we experience or what other tell us to be true. No, there can't be other way to have a belief unless you don't experience it or unless you are not being told by someone or taught by someone, um, you know. और कोई वजह नहीं है. अगर आपने सोच के उसके ऊपर काम किया तो भी आप you are experiencing it in your mind. So most of our core beliefs are formed when we are children, particularly in the area of self-repeat, achievement and safety. Now, अच्छा ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. हम जब छोटे होते हैं, यानी कि बच्चा जब पैदा होता है, उसकी पैदाइश से लेके उसके 9 साल की एज तक का जो अरसा होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. क्यों? क्योंकि मैंने आपको कल बताया था कि जहन के 4 पोर्शंस होते हैं. सो अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड देन कॉन्शियस माइंड. और कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के बीच में देयर इज अ लेयर, इट्स अ फायरवॉल. ये एक डिवाइन हमें सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म दिया गया है, उसको हम कहते हैं क्रिटिकल फैक्टर. क्रिटिकल फैक्टर, ओके. सो फॉर इंस्टेंस मैं आप लोग को तमाम जज हजरात को या साहिबान को मैं अगर ये कहूं कि आज के बाद से आपने काला कलर नहीं पहनना है क्लोथिंग में, तो आप ठीक है मेरी बात सुन तो लेंगे, लेकिन आप कहेंगे कि क्यों नहीं पहनना है मुझे काला कलर, या मुझे व्हाइट नहीं पहनना है, तो क्यों नहीं पहनना है मुझे. ये चीज कहां से ये बैकफायर हो रही है, ये सबकॉन्शियस में मैसेज गया. क्रिटिकल फैक्टर ने कहा कि ये पैगाम बाहर से आया हुआ है, ठीक है, और वो सबकॉन्शियस तक नहीं जाएगा. याद रखें, जो पैगाम मेरा सबकॉन्शियस तक चला गया अगर बगैर इस फिल्टर के, तो वो प्रोग्राम हो जाएगा. नाउ ये मैं बता किस लिए रहा हूं, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है, उसकी पैदाइश से लेके 9 साल के अरसे तक ये बच्चा, इसका जो क्रिटिकल फैक्टर है ये डेवलप नहीं होता है. यानी कि वो सबकॉन्शियस उसका बेदार होता है, राइट. सो जो आप उसको दिखा रहे होते हैं, जो आप उसको सिखा रहे होते हैं, जो आप उसको एक्सपीरियंस करा रहे होते हैं, वो उसके जहन में नक्श हो जाता है. इसकी एक छोटी सी एग्जांपल, आप कभी ऑफिस से जा रहे हो घर की तरफ, और घर जाते वक्त आपके रास्ते में कोई काली बिल्ली आ जाए, राइट, एंड यू वुड नो कि ये नहीं, इशू नहीं करेगा इतना ये, लेकिन उसके बावजूद 1 मिनट के लिए ब्रेक जरूर लग जाएगा आपको. सर होता है, क्योंकि हमारे यहाँ एक क्या कहते हैं, कहा जाता है कि काली बिल्ली है, बिल्ली का गुजरना, रास्ते को काटना मीन्स आगे जाके रास्ते वो काम नहीं होगा. तो हाँ एक नहीं होगा, परसेप्शन. या कोई एग्जैक्टली ये क्योंकि ये हम बचपन में सुना था हमने, और बचपन में सुनी वो चीज ऐसे नक्श हो गई है कि अगर मैं आपको कह भी दूं कि ऐसा नहीं है, मिसाल है, ठीक है, तो भी आपके जहन में ये चीज नक्श रहेगी. जी सर. जी. देखिए सर, काली बिल्ली वाली बात पे मुझे याद आया कि मेरे साथ ये कभी नहीं हुआ. ओके. एक काली बिल्ली आ गई है, रास्ता काट लिया उसने, अब कोई काम नहीं होगा, क्योंकि ओके. मेरे बचपन से लेकर अब तक, मतलब बचपन में जो चीजें बंदा सुनता है वो याद रह जाती है. लेकिन मेरे ना पेरेंट्स ने, ना दादा दादी ने, ना नाना नानी ने ये बात मुझे बताई नहीं कभी. उन्होंने ओके. कभी कहा. सो नाउ वी हैव अनदर एग्जांपल. देखें, अब इनको बताई नहीं गई तो इनके लिए वो मैटर ही नहीं करता, हालांकि इन्होंने और जगहों से सुना. तो इन्होंने उस अरसे के बाद सुना जब जब जो आपका क्रिटिकल फैक्टर है वो ज़्यादा डेवलप नहीं होता, तो उसकी वजह से वो इंप्रेशन नहीं आया, ठीक है. तो इसीलिए ये मैं रेलेवेंट इसलिए कर रहा हूँ कि जहाँ पे यहाँ पे मेंशन हुआ था कि मोस्ट ऑफ आवर कोर बिलीव्स आर फॉर्म्ड व्हेन वी आर चिल्ड्रन. तो हम लोग कुछ माइंडसेट्स बना लेते हैं, कुछ हम बिलीव्स बना लेते हैं, और उन बिलीव्स के ऊपर हम बड़े होने के बावजूद चल रहे होते हैं, राइट. सो ये है कि इसको हम अगर थोड़ा सा आगे इलैबोरेट करें. अब रैशनल बिलीफ एंड इरैशनल बिलीफ में क्या हुआ है. So, rational beliefs are defined as beliefs that are flexible, non-extreme,
एंड लॉजिकल एंड कंसिस्टेंट विद रियलिटी। ठीक है, रैशनल क्या है? जो कि रियलिटी पे मबनी हो। हाँ सर, मैं इसमें कुछ ऐड करना चाह रहा था। ये प्लीज। इसी तरह है जिस तरह हमारे सबकॉन्शियस में ये है कि जब हम कोई सांप देखते हैं तो नॉर्मली उससे हम डिस्टेंस रखते हैं, हालांकि हमें पता है, वी नो दैट, कि सारे सांप जो हैं वो जहरीले नहीं होते। ठीक है, उसके बावजूद हमें ये है कि हम उसे यही समझ के चल रहे होते हैं कि ये जहरीला होगा और ये हमें काट सकता है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। क्योंकि ये, और ये काली बिल्ली वाला भी ये ऐसे ही है कि जैसे ही हमें नजर आती है तो हमें मतलब फर्स्ट मतलब थिंकिंग यही आती है उससे कि ये जो है, मतलब जो नॉर्मली सब सोचते हैं कि ऐसा होगा, लेकिन सेकंड मतलब जो है वो थॉट यही होता है कि नहीं भाई ठीक है, मतलब ये तो सिर्फ एक वो मतलब मिथ है, ऐसी कोई बात, मतलब रियलिटी में कुछ नहीं है, बट ये सोच जरूर आती है। बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट। सो एक और बिल्कुल एग्री करूंगा मैं आपकी बात से कि हर वो चीज़ जो आपने इंजेस्ट की हुई हो, एक हार्ड फिक्स फ्रेम वो आपको रिकॉल होता है। अच्छा, अब मैं आपको रैशनल और इरैशनल बिलीफ के बारे में बता रहा था। सो रैशनल बिलीफ कौन से हैं? जो कि फ्लेक्सिबल होते हैं, एक्सट्रीम पे नहीं होते और रियलिटी पे मबनी होते हैं। ठीक है, यानी कि हकीकत से उसका ताल्लुक होता है। वो किसी भी सांचे में ढल सकते हैं और वो फ्लेक्सिबल होते हैं क्योंकि आपने एक पेरीमीटर जो है इसका वो रियलिटी है। इररेशनल बिलीफ कौन से होते हैं? जो कि रिजिड होते हैं, अपनी जगह पे कायम होते हैं, वो हिलते नहीं हैं। एंड एट सम पॉइंट वो एक्सट्रीम पे भी जाते हैं क्योंकि वो आपने एक पैरामीटर बनाया हुआ है, अब वो चाहे किसी का बिगिनिंग हो एक्सट्रीम हो, वट आपने कहा कि नहीं ऐसे ही है। और इलॉजिकल होते हैं। ठीक है, उनका हकीकत से ताल्लुक नहीं होता और वो इसीलिए कभी भी कंसिस्टेंट नहीं रहते। अब इसकी एग्जांपल क्या है? मैं ये पेन अगर मैं फेंकूंगा अभी, यानी कि इस पेन को छोड़ूंगा, तो ये पेन नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा? तो हम सबको पता है कि रैशनली ये बात मानने वाली है कि ये पेन नीचे जाएगा। ठीक है, अब एक शख्स है, वो महज अपने एक्सपीरियंस पे, लेट से वो स्पेस में गया और वहां पे ग्रेविटी नहीं थी और वो पेन हवा में फ्लोट कर रहा था, वो ये बात पे लेट से वो इरेशनल बिलीव रखने वाला शख्स है, अगर आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन वो स्पेस में जाएगा अगर ऐसा शख्स, लेकिन लेट से कि अगर ऐसा है, सो वो कहेगा नहीं जनाब आप पेन को रखें तो समटाइम्स ये हवा में भी रहता है, मैं बता रहा हूँ आपको, हवा में रहता है ये, नीचे नहीं गिरता, जरूरी नहीं कि हर दफा नीचे गिरे, मैंने खुद देखा हुआ है ये। ठीक है, लेकिन एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक रैशनल बिलीफ का तो हमने डिफाइन कर दिया कि पेन है तो नीचे जाएगा, लेकिन रैशनल बिलीफ का ताल्लुक आपकी नॉलेज से भी बहुत है और आपके पढ़ने से बहुत है और आपके डायलॉग एक्सपीरियंस करने से बहुत है। और वो ये है कि आप लेट्स से मैं अगर आप लोगों को कहूं कि क्या दुनिया में कलर एग्जिस्ट करते हैं, तो आप लोग का क्या जवाब होगा? क्या दुनिया में रंग एग्जिस्ट करते हैं रैशनली स्पीकिंग? तो क्या जवाब होगा? चैट में कोई दो तीन लिख के बता दें, या डिस कलर एग्जिस्ट? यस सर, एग्जिस्ट एग्जैक्टली करता यही है, से दैट इट ओके, एग्जिस्ट। रैशनली। ठीक है, बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल सही है, ओके, बेहतरीन। अच्छा, अब अगर मैं आपको कहूं रैशनली स्पीकिंग कि कलर एग्जिस्ट नहीं करते दुनिया में, तो आप लोग को लग रहा होगा कि ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि हम फिर जो रंग देखते हैं वो क्या है? ठीक है, तो दुनिया में सिर्फ लाइट एग्जिस्ट करती है और किसी भी सरफेस के लाइट एब्जॉर्ब या उसके रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन से कलर बनता है। यानी कि कोई भी सरफेस है, अगर वो पूरी तरीके से कोई कलर एब्जॉर्ब कर रही है इट बिकम्स ब्लैक, पूरी तरीके से रिफ्लेक्ट कर रही है इट बिकम्स व्हाइट, और इसके बीच में तमाम टिंट्स एंड शेड्स हैं, राइट? दैट इज द साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन बाय द वे। ठीक है ना? अभी मैंने सवाल क्यों किया? क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा साइंस की तरफ, क्योंकि हमारा उससे तो वो नहीं पड़ा, उस तरीके से ताल्लुक नहीं पड़ा, सो हमने इतनी ज्यादा डिटेल में इसको एक्सप्लोर नहीं किया। सो मैं ये बता रहा हूं कि रैशनल बिलीफ के ऊपर अब क्या हुआ कि हमने एक नई चीज एक्सप्लोर की, रैशनली स्पीकिंग। तो हमें इसी तरीके से आपके घर में इस वक्त लाइट जल रही होगी, उसकी तरफ देखें, और आपसे अगर मैं कहूं कि लाइट क्या कंसेक्यूटिव ऑन है, तो आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब होगा कि
हाँ ये ऑन है, ऐसा ही है। कोई भी लाइट आपके पास जो जल रही है इस वक्त, बल्ब या ट्यूब लाइट या एलईडी, इज इट ऑन, राइट? या जो मेरे पास लाइट चल रही है ये भी आपके ख्याल में ये ऑन होगी, लेकिन एक्चुअल में ये ऑन नहीं है, इट इज गेटिंग ऑन एंड ऑफ 44 टाइम्स इन अ सेकेंड, 44 टाइम्स इन अ सेकेंड, जो कि ये इल्यूजन क्रिएट कर रही है कि ये ऑन है कंसेक्यूटिव। ठीक है, तो रैशनल बिलीफ में ये अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है कि रैशनल बिलीफ उसी हद तक काम करेंगे कि अगर हम एडेप्टिव हैं अपनी नॉलेज बढ़ाने में, तो हम हमेशा फ्लेक्सिबल रहेंगे। ओके फाइन, देयर इज अ न्यू एक्सप्लेनेशन, क्या इसके पीछे रीजन है, क्या लॉजिक है, एंड देन वी गो फॉर इट। क्लियर है ये? सो irrational beliefs usually manifest in the form of I should, like I should, irrational belief, or I have to. Furthermore, you consider them as an obligation you must fulfill. Like irrational belief, if you don't go for it, अगर आपने उसके ऊपर खड़े नहीं रहे तो दुनिया तबाह हो जाएगी। अगर आप उसके ऊपर खड़े नहीं रहे, अगर आप उसके ऊपर कायम नहीं रहे, तो वो जो है सब मिसमैच हो जाएगा। सो इरेशनल बिलीफ आपके बड़े फर्म होते हैं, आप वो शेक नहीं होते। One thing to understand is that our beliefs are really based solely on facts and evidence, but rather our interpretation of the facts and evidence. Every collection of fact is a frame in a certain way and look at through a particular perspective. अच्छा, ये इसके लिए एक बड़ी मजे की एग्जांपल मेरे जहन में है। अम, मान लें कि आपको एक पिक्चर दिखाई गई है और उस पिक्चर में, अच्छा आपको नहीं पता कि कौन सी स्पीसीज क्या है, यानी कि आपको नहीं पता कि सांप एक डसने वाला वो है या रेप्टाइल है या वो मासूम सा बेजर सा है। सो सांप के मुंह में मछली है और वो समंदर के किनारे पे। ठीक है, सो तो मैं आपके पास आपके कोर्ट में एक एविडेंस लेके आता हूं कि ये सांप के मुंह में मछली है, एंड एक उस पे नीचे कैप्शन ये है या मेरी दलील ये है कि ये सांप जो है ये समंदर में से मछली को हंट करके वापस साहिल पे लेके जा रहा है और खाने खाने जा रहा है। एक ये है, और दूसरी ये है कि मासूम सांप साहिल पे पड़ी मछली को समंदर की तरफ लेके जा रहा है, लेकिन वो सांप ना समंदर में है यानी कि कंप्लीटली, और ना साहिल पे यानी कि वो लहरों के आसपास है। तो आप किस चीज पे बिलीव करेंगे, राइट? सो अब यहां पे क्या चीज आ जाएगी कि आप इसको बेस्ड ऑन योर बिलीफ सिस्टम इसको फ्रेम कैसे करते हैं। It would totally depend on that, how you frame it. So it's very, very important to keep your perspective open, go for the rationality कि अच्छा, you know, yeah, exactly. ठीक है, फेमिना साहब ने बोला कि सेकंड वन। सो लाइक यू नो, it's very, very important for you to understand the construction of the evidence of the piece of fragments या information जो कि आपको मिल रही है, कि आप उसको मुख्तलिफ जगहों पे फ्रेम करके देखें कि is it making any sense or not, and then you will have alternate reality, you will have alternate truth. ठीक है, there's a truth and there is alternate truth as well, right? Okay, how to identify irrational beliefs? Because our task is to go away and get away and stay away as much as possible from irrational belief. That is the goal, right? If you do that, you would be automatically to have rational beliefs, right? और इसकी कोशिश आपसे करनी है। आप पहली बार में 100% कर लें ऐसा जरूरी नहीं है, इसकी आपने कोशिश करती रहनी, जिद्दोजहद करती रहनी है आपने। ठीक है, पे अटेंशन टू योर लैंग्वेज, right? Choice of word matter, obviously. That should, must, always, never. ये वो हैं हतमी बातें. Oftentimes, your interpretation of a situation can cause negative emotion to appear or to increase them more than necessary, right? आपके बाज़ ऐसे फेजेस आते हैं जिसमें वो आप उसको नागुज़ीर कर लेते हैं
कि ये आपने मेरी बात समझी, अगर आपने मेरी बात नहीं समझी तो आपको आपको फिर पर्सपेक्टिव ही नहीं पता चलेगा, ठीक है। आपने अगर ये काम इस बिलीफ सिस्टम के अंदर ना देखा तो आपको फिर इसका पर्सपेक्टिव ही नहीं पता चलेगा, एंड सो एंड सो फोर्थ। ये आइडेंटिफिकेशन है इरेशनल बिलीफ की। जब भी आपके इस टाइप के ट्रिगर्स देखें दैट नहीं नहीं ये तो लाजमी ऐसा ही होगा, ठीक है। एक मर्द की तरफ से केस आया है खातून को हैरेस करने के लिए, तो ये 100% सर्टेनिटी है कि मर्द गिल्टी है, राइट। क्योंकि हमने मेजॉरिटी केसेस देखे हैं उसके अंदर कि वो गिल्टी होता है एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, एट मेजॉरिटी पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन उस बिलीफ सिस्टम पे अब हमने क्या कर दिया कि अगर हैरेसमेंट हुई है सो 100% गिल्टी होगा मर्द, या कुछ ना कुछ इसने बुरा किया होगा, वरना क्या जरूरत पड़ी किसी को उसके बारे में कंप्लेन करने की, केस करने की, एंड सो फोर्थ। सो ये आपने अपने आप को ये डेफिनेटिव कंडीशन से हटाना है, लाइक that it must be like this, it is always like this, and it's never like this, and so on and so forth. So we were discussing to identify the irrational belief. Now um, I would want right now to take, let's say, 3-4 minutes to take samples from you, that how many of you understood the basic dichotomy of rational and irrational beliefs and how to identify it. कोशिश करें कि वो लोग बिल्कुल ज़्यादा पार्टिसिपेट करें जिन्होंने कल नहीं किया था। वी हैव लॉट्स ऑफ participants. Mehtab Saab, we have Hinanaz, Miss Hinanaz, Miss Kaval, Mr. Mohammed Ehsan. सर आपकी रैशनल और इरेशनल की बात समझ में तो आ गई है, क्योंकि क्लियर भी है आपकी इस पॉइंट से क्लियर होगी, क्योंकि पहले आपने जो कलर का क्वेश्चन किया था कि हमने समझा कि बिल्कुल कलर्स हैं, जब आपने जस्टिफाई किया तो वो चीज़ समझ में आ गई। तो फ्लेक्सिबिलिटी हमारे रैशनैलिटी में थी, तभी वो चीज़ समझ में आ गई। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इस इरेशनल के पॉइंट पे मेरा एक दोस्त था जिसको अभी तक यही बिलीफ है कि सूरज अभी तक ईस्ट से निकलता है और वेस्ट से डूबता है। मैंने कहा आजकल की साइंस है, ऐसा कुछ नहीं है, हम सूरज के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। नहीं, वो आज तक ये चीज मानने के लिए तैयार नहीं है। तो ये उसकी रिजिडिटी है, जो इरेशनैलिटी है, जो अभी तक उसके जहन में वही कायम है। देखिए, regardless of someone's belief system, मेरा अपना एक्सपीरियंस ये रहा है कि अगर आपका कोई भी हार्डकोर बिलीफ है और आप एक्सट्रीम पे जा रहे हैं उस बिलीफ को रहने के लिए, एंड मैं अगर आपको बेस्ड ऑन रैशनैलिटी, अगर मैं आपको बहुत हार्ड स्टांस दूंगा कि नहीं, यू अंडरस्टैंड मी, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, or what you are saying is wrong, what I'm saying is right, so I would never make my point, I would never be able to make myself understood. मैंने कल आपको बताया था कि whenever someone do the argument, right, go for specificity or go for level of abstraction. Either go for specificity or go for level of abstraction. That's how you make yourself understand. That's how you push someone कि वो आप उससे सवाल करें वाले जिसके ऊपर वो खुद सोचने पे मजबूर हो जाए, और वो बाज़ औक़ात एक क्वेश्चन ही उसको उस थॉट से हटा देता है, बट इट शुड बी पोलाइट, इट शुड बी communicate in a nice way so that आपकी रैपिटिंग हो, right? Without रैपिटिंग you would not be able to achieve. Having said that, कल मैंने आप लोगों को कहा था कि identify a situation जो कि आपको perplexity में डाल रही है and so forth, or do a little bit of assignment of 5 whys. How many of you try to do it last night? No sir, हमने नहीं किया। Actually Right. we were too busy. I'm sure. अच्छा, उसको करिएगा, लाजमी उसको करके देखिएगा, बिकॉज वो आपको अंडरस्टैंड करता है एंड इट वर्क्स लाइक मैजिक। आई कैन नॉट स्ट्रेस इट इनफ कि अच्छा नहीं किया, मेजॉरिटी लोगों ने मेरे ख्याल से नहीं किया हो।
सो इसको लाजमी आज अपने टू डू लिस्ट में डाल दीजिएगा। एक मैं आपको रिकमेंडेशन दूंगा, टू हैव सम सॉर्ट ऑफ एप्लीकेशन इन योर सेल फोन, या कोई अपनी डायरी लिख दें जिसके अंदर आप टू डू लिस्ट वो कर रहे हैं उसके अंदर लाजमी लिखें, और जो काम नहीं कर पाए उस दिन उसको नेक्स्ट डे कैरी फॉरवर्ड पे डाल दें, सो दैट वो आपके जहन पर वक्त रहेगा एंड यू वुड बी एबल टू डू इट। लाइक आई सेड, ये जो सेशन आप ले रहे हैं कल का आज का, दिस विल by listening to it, this can only help you so far. In order to get gist of it, in order to get really value out of it, you would need to participate a lot, both synchronously and asynchronously. Like आप यहाँ पे भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं ड्यूरिंग द सेशन, और जो आपको मैं शॉर्ट टिप्स दे रहा हूँ, साइड असाइनमेंट्स दे रहा हूँ, वो उसको भी जो है ना आप वो करें। कौन सा पॉइंट आकाश साहब आप कह रहे हैं, दोबारा मैं रिपीट करूं? आपने जो अभी आपने कहा है कि सोने से पहले, प्लीज वो चीज जरा रिपीट कर दें ताकि हम। अच्छा, देखें, एक अपनी प्रोडक्टिव डायरी एक वो कर लें, ठीक है। मैंने आपको कल कहा कि आई विल शेयर अ टूल किट विद यू इंशाल्लाह ताला ऑन लास्ट डे ऑफ आवर सेशन, which will help you a lot. It would be kind of a toolkit for you to go with it, जो आपकी लाइफ में है। बट जो मैंने कह रहा था कि सोने से पहले मेक अ डायरी फॉर योर सेल्फ और एप्लीकेशन फॉर टू डूज, जिसके अंदर आप ये लिखें कि फॉर इंस्टेंस साइड असाइनमेंट्स मेरे अगर कुछ हैं आज के, वो क्या हैं, मुझे अपने लिए कुछ अगर टाइम चाहिए तो क्या चाहिए। देखें, आप लोग का स्केड्यूल तो आप लोग को पता ही है, एंड व्हाट यू गाइस आर डूइंग, इट्स अ लॉट ऑफ वर्क, इट्स स्ट्रेसफुल, बट इसी में से ही आपने अपने लिए टाइम निकालना है, राइट? और आपने अपने लिए टाइम लाजमी निकालना है, ठीक है। सो अगर आप इसको प्रोडक्टिव नहीं बनाते अपने लिए, और आप इसके साइड असाइनमेंट्स और मेन असाइनमेंट्स नहीं करते, और ये होने के बाद, ख़त्म होने के बाद भी, आई वुड वांट यू टू गो थ्रू विद दीज नोट्स जो आपके पास मौजूद है मॉड्यूल के अंदर, LMS पे भी डले हुए हैं। सो इसको दोबारा आप गो थ्रू करेंगे, बिकॉज एवरी टाइम व्हेन यू लुक बैक एट इट, और उसको जब आप प्रैक्टिस करेंगे, वापस देखेंगे, यू विल हैव अ न्यू पर्सपेक्टिव फॉर इट। सो इट विल रियली रियली हेल्प यू अ लॉट। सो आई वाज सेइंग कि मुझे कोई ये इरेशनैलिटी और रैशनैलिटी जो बिलीफ सिस्टम है, इसके ऊपर मुझे कुछ सैंपल्स चाहिए थे, स्पेशली दोज हु डिड नॉट पार्टिसिपेट सो फार। सर जी वो आपने पहले जो बात कही है कि जी अपने जी लिए कुछ टाइम निकालें। जी 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 सपोज आपके कहने के बाद अगर फॉर सपोज 5 मिनट के या 10 मिनट के लिए हम मेडिटेशन के लिए टाइम निकालते हैं, वुड दैट बी सफिशिएंट? देखिए, मेडिटेशन इज योर प्रैक्टिस जो कि आपको बेहतर करेगा इन अ फॉर्म ऑफ वो आपको एक सेल्फ ऑफ अट्यूनमेंट देगा, आप उससे रिसेप्टिव हो जाते हैं ज़्यादा, बट मेडिटेशन itself will not, let's say, enhance your knowledge. Meditation itself will not make you better at writing something, let's say, or reading, or let's say your goal is to do the speed reading. तो मेडिटेशन आपको उसके लिए मदद करेगा, जो भी आप टास्क कर रहे हैं उसके लिए रिसेप्टिव बनाएगा, उसके लिए आपको मदद देगा। सो मेडिटेशन, यस, इट्स ग्रेट, यू शुड हैव इट। इनफैक्ट कल के उसके अंदर मैं सेशन में in social skills I will discuss this as well as a tool, meditation. It's very helpful, but जो मैंने टाइम निकालने को कहा है, बेशक 10-15 मिनट हो, that's for you only, and things that you need to write, things that you need to express, but आपके पास कुछ ऐसे sensitive issues होते होंगे जो कि आप डिस्कस नहीं कर सकते किसी के साथ for some reason, you can write it to yourself, and you know yourself कि you can trust yourself, right? So okay, so Miss Fahmida का सवाल है कि how to memorize thing in a tough schedule. See, you don't need to memorize. ये जो हमारी हैबिट हमें स्कूल से बनाई गई है that we need to memorize pretty much everything. You don't need to memorize it. जो भी चीज़ आपको memorize करनी है, what you need to do is you need to harness that piece of information. उसको पढ़ें आप, और उसकी कोई एक एनालॉजी बना लें, कोई एग्जाम्पल बना लें, कोई इसकी मिसाल बना लें, और होगा क्या कि आपको इवेंचुअली वो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन तो शायद भूल जाए, लेकिन वो मिसाल याद रहे, और जिससे आपको वो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन भी रेफरेबल होगा हमेशा, ठीक है। सो यू वुड नॉट
you wouldn't feel के आपको उसकी memorization की जरूरत है as such. जी. वो कंफ्यूजन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह मेमोरी मेरी बहुत अच्छी है, मुझे चीजें याद भी रहती हैं, Great, लिखने की जरूरत भी great, नहीं पड़ती। great. लेकिन मसला ये है कि अब चूंकि बहुत मतलब जिंदगी इस तरह की हो गई है, लाइफ इस तरह की हो गई है कि उसमें टाइम नहीं मिलता बिल्कुल भी, Right, जैसे अपने लिए भी टाइम नहीं मिलता। उसमें right. मेरे साथ एक जो इशू आ गया है, जो प्रॉब्लम मुझे जो फेस करनी पड़ती है और मुझे बहुत ज़्यादा फील होने लगा है, ये कि मुझे लोगों के नाम याद नहीं रहते। Mm-hmm. मैं जब बात कर रही होती हूँ, मुझे Mm-hmm. शक्ल नहीं भूलती कभी किसी की। मैं एक दफ़ा किसी Okay. को देखती हूँ, मुझे याद रह जाता है। इवन लिटिगेंट्स आते वो काफ़ी सालों बाद भी आ जाए मेरे सामने, मुझे याद आ जाता है कि ये किसी केस में अपीयर हुए थे मेरे सामने, Right, right. और केस भी मुझे याद रहता है। Mm. केसेस के That, फैक्ट्स याद रहते हैं, लेकिन मुझे लोगों के नाम याद नहीं रहते। और जब मैं बात कर रही होती हूँ, तो मुझे अब ऐसा लगने लगा है कि जो अल्फाज होते हैं वो मिस हो रहे हैं बीच में। अच्छा, ठीक. मतलब जी, दो. उनकी उस तरह से अदायगी नहीं कर पाती। मुझे ऐसा लगता है मेरे जहन से वो चीज़ें जैसे गायब होती जा रही हैं। ओके. नहीं, कुछ वजूहत हैं इसके पीछे. वो गायब नहीं हो रही है. बोलते हुए अल्फाज का मिस होना इस बात की अलामत है कि आपका जहन आपके बॉडी से ज़्यादा तेज़ चल रहा है, यानी कि आप उतनी तेज़ी से बोल नहीं पा रहे जितनी तेज़ी से आप सोच रहे हैं, और क्योंकि वो जहन कंसेक्यूटिव लूप में होता है तो वो आगे निकल जाता है, और वो इन्फॉर्मेशन जो पहले से सोची हुई होती है वो आप बोल नहीं पाते, तो मिस हो जाती है. सो ऐसा नहीं है. और ये आमतौर पर जब होता है जब आप एक वक्त में पैरेलल 2 या 3 चीज़ों पे सोच रहे हो, या 1 या 2 3 इश्यूज पे आप एक साथ पैरेलल सोच रहे हो अनकॉन्शियसली, राइट. आपको फेसेस याद रहते हैं और आपको नाम भूल जाते हैं. अगेन दैट्स pretty much all right. At least you know one thing. You either know the face or you either remember the name. देखिए, हमारी मेमोरी बेस्ड करती है विजुअल मेमोरी पे. ये जो ब्रेन है ये वर्क करता है विजुअल मेमोरी पे. अगर आप कोई अल्फाबेट पढ़ते हैं तो उसको भी हम इंडिविजुअली विजुअली तोड़ तोड़ कर हम इंजेस्ट कर रहे होते हैं इन आवर सबकॉन्शियस, राइट. So it's very easy for us to memorize the pictures rather than letters, alphabets, or a piece of content, right? So और फिर मैंने आपको एक ये कल भी बताया था कि you आपकी जो eyes हैं ये मोर अराउंड अबाउट 50% एनर्जी आपकी ड्रेन कर रही होती है. 50% एनर्जी आपकी ड्रेन कर रही होती है जस्ट योर आइज, राइट. एंड व्हाई इज दैट? बिकॉज it is helping you to harness 10 million bits of information per second, which is a lot to digest, right? 10 million bits of information per second. Now, your brain is able to, delete, distort, generalization, just 128 bit of information. Okay. So when you have a lot of data, you need to somehow, manage it. So ये वजह है कि वो चीज़ जो कि आसान लगती है, ब्रेन उसको पकड़ लेता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन वो कर सके. Right. Okay, so एक correction आई है 47% energy. Right. अब्दुल शकूर साहब की तरफ से. So now how to avoid overthinking and control anger. Um, I'll try to cover it in tomorrow session. कल मैंने इसको कुछ थोड़ा सा वो किया था. देखिए, इस सेशन का टाइम थोड़ा सा जो है वो लिमिटेड है. सो नीड टू कवर लाइक एटलीस्ट सम ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ थिंग्स. I would love to explain things that how to overthinking and control anger, but that's a deep topic. I don't know. मैं फुरकान साहब से और अली साहब से बात करूंगा कि if we can do something about it, we will इंशाल्लाह ताला, right? So जी सर, माय क्वेश्चन इज दैट कि आपने जो दो आइडेंटिफाई की हैं बिलीव्स, इरेशनल और रैशनल, जी जी जी. तो आपने बताया नहीं कि कौन सी बिलीव्स जो है वो गुड हैं. Okay. क्योंकि हम जो वी आर सराउंडेड बाय दोज पीपल हु कीप इरेशनल बिलीव्स. कोई ऐसा भी हमें बंदा मिल जाता है जो हमें कहता है कि सर इस कोर्ट में पहले कब्रिस्तान था, यहाँ पर जिन थे और यहाँ पर अजीब वाक़यात होते हैं, 2 बंदे पहले से ही इधर मर गए हैं. तो ऐसे लोगों के साथ हम रहते हैं जो वी आर सराउंडेड बाय दोज पीपल हु कीप इरेशनल बिलीव्स. तो व्हिच बिलीव्स आर गुड टू कीप?
Okay, good. So 99.9999% of the time, rational belief, you know. But like I said, it would be 100% rational belief, but why I put 99.99%? Okay, perfect. So why I put 99.99%? Because so that you can be flexible in your rational belief, because your rational belief will be as much or as limited as your knowledge is, right? जैसे मैंने एग्जांपल दी थी कलर की, वो मैंने दी इसलिए थी क्योंकि अगर मैं ये एक्सप्लेन नहीं करता तो आप इस कंटेंट को मार्क कर देते एज एन इरेशनल कंटेंट, क्योंकि हम कलर देख सकते हैं, तो रैशनली कैसे हो सकता है कि कलर एग्जिस्ट ना करें दुनिया में? अगर ये क्योंकि ओवर बर्डन हो जाते हैं हम, सब नहीं होता कि हमारे बिलीफ उनके बिलीफ से टकराव होते हैं, को हम इरिटेट होते हैं कि यार ये क्या बात कर रहा है। ओके देखिए, ये हमारे पास टॉपिक है टुमारो फॉर सोशल स्किल्स। उसके अंदर मैं ये चीज़ें थोड़ी सी एक्सप्लेन करूंगा कि एक अपियरेंटली इरिटेटिंग मैसेज या कंटेंट जो मेरे पास आ रहा है वो मैं कैसे डाइल्यूट करूं, कैसे उसको मिटिगेट करूं, कैसे वो मुझ पे असरअंदाज ना हो, राइट? मैंने कल एक छोटी सी एग्जांपल दी थी कि हमारे जो चेस्ट है इस पे इमेजिन करें देयर इज अ वर्चुअल कीबोर्ड ऑन इट, and there is a button to cry and laugh and make you smile and make you angry and on, right? And मैंने कहा कि दूसरा शख्स आता है, वो बटन दबाता है and make you irritate. तो आप ये वही वाली बात कर रहे हैं कि दूसरा शख्स कोई बात करता है और उससे इरिटेट हो जाते हैं, ऑब्वियसली इरिटेटिंग अपीरेंटली बात होगी और उससे इरिटेट होगा, बट योर वर्क इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपने अपना काम एक बड़े के तौर पे करना है, एक सरबराह के तौर पर करना है। आपने अपना काम यानी कि जो जजमेंट है वो ये पूरा सेशन होते हुए आपने ये तासुर लोगों के जहन में बिठा देना है कि मैं आपकी बात सुन रहा हूं, यू आर बीइंग हर्ड, यू आर बीइंग अंडरस्टूड, एंड हेंस आई एम डिसाइडिंग दिस जजमेंट, हेंस आई केम टू दिस कंक्लूजन। सामने से लोग हर किस्म की बात करेंगे, ठीक है? यू कैन नॉट कंट्रोल योर ऑडियंस, बट यू कैन कंट्रोल इज दैट हाउ यू टेक योर इंटरप्रिटेशन टुवर्ड्स थिंग्स, ठीक है? आपका कोई दोस्त है काशिफ साहब, वो अगर आपको कोई बहुत गैर मनतकी की बात भी बोल दे तो आप मुस्कुरा देते होंगे, आई एम श्योर, या आपसे कैजुअल भी होता होगा तो you might have smile on your face, but same thing you would not expect from stranger. Why? It is, there was not wrong with that piece of content that you are harnessing. There wasn't anything wrong about it. जो एक्चुअल में प्रॉब्लम होता है वो आपका होता है इंटरप्रिटेशन का टुवर्ड थिंग्स दैट चेंज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, दैट चेंज ओवर द पीरियड ऑफ केसेस एंड कंटेंट एंड विद पीपल. So but we'll cover it in more detail tomorrow inshallah. I think tomorrow है या day after tomorrow topic में है मेरे पास. So I hope that we are done with the rational and irrational belief. Now let's go for the assignment, but before that let's take a quote here. Your beliefs are a magnet that create your reality. Now it's such a beautiful piece of content. I mean, आप इसके बारे में सोचें, it's so condensed and it explains everything. कि जो आपका बिलीफ सिस्टम है ये बिल्कुल एक मैग्नेट की तरह है जो कि आपके इर्द गिर्द रियलिटी बनाता है. हम जिस शहर में रह रहे हैं ये, या जिस देहात में रह रहे हैं या जिस गांव में रह रहे हैं, ये बुरा है या अच्छा है, दोनों बिलीफ सिस्टम हो सकते हैं, राइट? और जो चीज पे हमने मान लिया, लेट्स से मैंने मान लिया कि इफ आई एम लिविंग इन स्टेट्स एंड मैंने मान लिया कि लाइफ इज हेल इन न्यूयॉर्क, देन न्यूयॉर्क विल बिकम हेल फॉर मी. दूसरों के लिए हो या ना हो, लेकिन मेरे इस यकीन ने इसको यकीनी तौर पर साबित कर देगा, ठीक है? सो व्हाट यू बिलीव, बी केयरफुल फॉर व्हाट यू बिलीव एंड मेक श्योर कि जो बिलीफ सिस्टम है आपका, क्या अच्छा क्या बुरा, कौन सही कौन गलत, ऑन एंड ऑन एंड ऑन, ये नॉलेज बेस पे हो और ये हमेशा फ्लेक्सिबल हो, बिकॉज नॉलेज कभी भी लाइक 100% नहीं होती है. दैट्स व्हाई आई सेड लाइक 99.99% एंड ऑन.
So a very beautiful quote here. Now your assignment. So obviously, you have to access the portal in the assignment section and fill in the assignment form information, and then you have to submit. Now, what's the assignment? The assignment content is that you need to read out handout 1 and handout 2, right? It would be available to you over there, handout 1 and handout 2. So please use your thought record sheet and categorize your thought according to thinking errors. Use handout 1, right? And after filling it out, try to identify which one is reliable to you, or you may have somewhat similar beliefs, not exactly what list has, and think of those situations where your beliefs made you feel unpleasant, sad, angry, or whatever in handout 2. ठीक है, तो ये एक शीट है. I'll try to share it with you, just show you for your understanding sake. ये आपने handout पढ़ना है, and then you have to fill this sheet. Can you see the sheet? Yes, we can. Yeah, okay. So Yes, sir. over here we have from left to right, we have situation, what sort of situation I was in, what sort of emotion was triggered, what sort of psychological sensation I had back then, and the thoughts that I was like having a loop, जो मैंने कल बताया था, loops, perplexity and all that, thoughts perplexity. एंड देन रेगुलेशन टेक्निक, जो आपकी बाय डिफॉल्ट रेगुलेशन टेक्निक थी वो क्या थी उस वक्त, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड, राइट? हैंडआउट 1 से आपने वो करना है, एंड हैंडआउट 2 से करना है. हैंडआउट्स जो है ना वो आपके पास अटैच्ड है. आई एम श्योर ये क्लियर होगा, ये आपको मिल जाएगा. सो नाउ रीफ्रेमिंग अनहेल्पफुल थॉट्स to be clear and goal oriented during a career in the criminal justice sector, right? How you reframe unhelpful thoughts to be clear. So अभी मेरे ख्याल से काशिफ साहब ने कहा था कि बाजू का से बहुत इरिटेटिंग बात आती है सामने से और उससे इरिटेट हो जाता है, like I said, so, and I was saying that your interpretation toward things supposed to be um, you know uh, in a way that by default your muscle memory, you can call it, कि वो ऐसी हो जाए कि वो उसको रिफ्रेम कर रही हो. अच्छा, मसल मेमोरी का बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप लोगों ने कभी ड्राइविंग शुरू में जब आप गाड़ी चलाते थे तो आप हैंडल को भी देख रहे थे, जो उसका स्टीयरिंग होता है, और उसके क्लचेस को भी देखते थे, और उसके ब्रेक्स को एंड रेस को एंड गियर को, हर चीज को देखते थे सिवाय रोड के. जो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिवाय उसकी आपकी नजर हर चीज पे जाती थी, राइट? एंड देन as the time goes, as the time pass, you are not even looking at things, you are not even looking at road, you are not looking at steering and all that, or gaadi chal rahi hai, and you know that I need to apply the brakes, and you know that I need to apply the race, and on, right? Okay, so Miss Sobia said that I should give an example. Okay, I will give you an hypothetical example because I would not share something from your content, right? Imagine I was, having a conversation with a person for negotiation, right? Or I'm just evaluating my ABC company, and it's based on tech sector, and the other person is having irrational belief that tech shouldn't be valued for X amount, let's say higher amount, because वो ये कह रहे हैं कि apparently it's a website, तो इसकी वैल्यू let's say 5 लाख होनी चाहिए instead of 5 करोड़ रुपए, right? ये सिचुएशन है. फॉर इंस्टेंस Amazon जैसी वेबसाइट है, एंड अ पर्सन कैन से व्हाट, वेबसाइट तो फ्री की भी बन जाती है, 5,000 की बन जाती है, तो व्हाई 5 बिलियन और 50 million and so forth. Now, अब ये जो सिचुएशन है, दिस कुड बी द सिचुएशन, पार्ट ऑफ इट. Emotions, what kind of emotions I was feeling when I was having this conversation. So in this case, generally speaking, I would be angry, right? Because I've worked on an infrastructure और वो बहुत lower value हो रहा है, and I would be really angry,
and a bit disgust in this situation. Psychological sensation, physiological sensation should be, because, if I'm angry, so I would have like, pain over here. Um, Maybe my heart rate is up and on and on. Thoughts that, what should I tell this person? How should I go with it? How should I you know make him understand my point of view, and so on and so forth. And regulation technique is that, taking a break, um, and then making my opponent, जिससे मेरी negotiation हो रही है उसको मैं understand करवाऊँ कि what, the infrastructure needs so and so components and so and so forth. So that's why it takes a lot of effort, a lot of working hours. That's why इसकी cost ऐसे है वैसे है, on and on. This was just a total hypothetical situation that I've given you, and a bit of idea. Reframing unhelpful thoughts and cognitive restructuring. ठीक है, आपको पता है हमारी cognitive abilities होती हैं, how we perceive things, how we portray it, how we communicate it, and so on and so forth. To reframe the thinking patterns, cognitive restructuring is one of the main techniques that has been successfully used to help people change the way they think. Right? Cognitive restructuring. One of the first steps of cognitive restructuring is being able to identify when a belief is illogical, irrational, and that you already learned through activity and handout, right? So जो आपका जो handout है ये इसमें मजीद मदद करेगा जानने के लिए. But having said that, cognitive restructuring से मुराद क्या है कि अगेन जो चीज मैंने पहले एक्सप्लेन की है, बेस्ड ऑन योर इंफॉर्मेशन, आप कुछ रूल्स बना लेते हैं. आप लोगों ने देखा होगा एक चीज होती है उसको हम कहते हैं फनल. फनल होती है जो ऊपर जो टेपर्ड होती है, थोड़ी सी ऊपर से उसका जो इनलेट होता है वो बड़ा होता है और आते आते टेपर हो जाती है और बहुत छोटी हो जाती है और बिल्कुल एंड में फिल्टर लगा होता है, राइट? जैसे ऑयल फनल होता है, हम ऑयल डाल देते हैं, सेंस ऑफ. कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग वर्क्स लाइक दिस, राइट, लाइक अ फनल. और इसमें फिल्टर्स होते हैं मुख्तलिफ, राइट? सो जो ये शख्स बात कह रहा है, इज इट वाइडली नोन, इज इट वाइडली एक्सेप्टेबल, इज इट वाइडली नोन और नॉट, देन ये क्या प्रैक्टिस हुई है या नहीं हुई है आज तक कभी? प्रैक्टिस हुई है तो रिजल्ट्स इसके कैसे आए हैं, अच्छे आए हैं, बुरे आए हैं, ठीक है? अगर अच्छे आए हैं तो फिर अब ये क्या हो रहा है कि यू आर गोइंग डीपर, आप उसको रैशनलाइज कर रहे हैं ऊपर से, बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग से यू आर गोइंग इनटू दी स्पेसिफिसिटी, राइट? एंड इसको स्ट्रक्चर करते करते यू नैरोइंग इट डाउन दैट is this piece of information is legit, is it good, is it better for society? मुख्तलिफ केसेस की मैं एग्जांपल दे रहा हूँ. So that's how you ingest information, and then you restructure it, and then you help yourself to a person is angry and he or she can say that I think that मेरे साथ जस्टिस नहीं हो रहा, लेट्स से. एंड आप ये सोचें कि अगर कोई आपको ये ऐसे सुनने को मिल रहा है या ऐसा परसीव हो रहा है कि उसको जस्टिस नहीं मिल रहा, लेट्स से अगर सुन नहीं भी रहे आप और ऐसा परसीव हो रहा है कि उसको जस्टिस नहीं मिल रहा, हाउ वुड यू थिंक? it would damage you, it would make you upset, it might make you angry, it might make you dull कि I'm putting my effort and सामने ये समझा जा रहा है कि उसको इंसाफ नहीं मिल रहा. लेट्स से वो असली उसके पास से परसेप्शन आ रही कि उसको ये लग रहा है कि इंसाफ नहीं मिल रहा, right? Now you need to restructure it. You need to restructure it that why is he or she saying this? Based on what? Based on what principle? हमने कल कुछ हमने references discuss किए थे.
किन प्रिंसिपल्स के ऊपर वो ये बात कह रहा है, क्यों कह रहा है ये बात, क्या वजह है उसको ये बात कहने में, एंड you know on and on. So this will help you a lot to restructure it, and then you would be able to communicate in a way कि जो कि उसको असरअंदाज हो उसको, right, या आपका गोल क्लियर करे. Self analysis. After identification of irrational belief, you need to debate to yourself. Ask yourself following questions. Are they logical? Whatever the thoughts and the messages that are being bombarded on you, are they logical? Yeah. Is this logical? Does it make sense? And are they realistic? If it even makes sense, are they realistic? So for instance, we say that Pakistan will prosper when we will build an engine that will go with the speed of light. Let's say, I'm just making a very obscure example here. So okay, does it make sense? Yes, it makes sense. There could be an engine that could go with the speed of light. Are they logical? Yes, we are just talking about increasing the efficiency and so on and so forth. But is it realistic? No, it's not. It's not, because we are far away from it, to achieving the speed of light. We can theoretically go near to that, theoretically speaking, but it's far, far from believing that it's a realistic thing for me to ask whenever we make an engine that will go with the speed of light, so we'll be prospering. So ये funnel जो है, ये आपके जहन में एक सबकॉन्शियस में बैठे हुए एक टूल की तरह हर वक्त होनी चाहिए. जो चीज आप इंजेस्ट कर रहे हैं, पहले आप इसको डेलिबरेटली करेंगे, पहले आप इसको कॉन्शियसली करेंगे. इट माइट मेक यू टायर्ड, इट माइट मेक यू लेथार्जिक और व्हाटएवर, लेकिन इस चीज को छोड़ना नहीं है आपने. व्हाई? बिकॉज कल मैंने बताया था, फेक इट टिल यू मेक इट, राइट. आप ये अंडरस्टैंड करें कि ये चीज आपके लिए हेल्पफुल है, एंड इट्स ग्रेट एंड इट्स गुड, एंड एंड have certainty with a positive approach, with a positive attribute. Have certainty. Your certainty can change pretty much everything. यकीन आपका वो चीजें अचीव करवा सकता है जो कि आप कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकते, लेकिन वो यकीन होना चाहिए, राइट. अंडरस्टैंडेबल है so far? कोई confusion? So Miss Humaira, tell me, so far was it confusing or abhi tak clear hai, and you got the pretty much gist out of it? Perfect, great. Thank you so much, guys. It's really helpful. Mr. Raza made a comment. He's saying our judicial system revolves around reasonability. Revolves around reasonability. Yeah, perfectly. Right. He mentioned a very a relevant point. Reasonability is a subliminal topic of rationality, right? You reason with someone based on rationales, right? So it's okay. So Miss Hinana said that how to face humiliation among the many people. Okay, perfect. So I'll be just brief, Miss Hina, about it. What is humiliation? For instance, in this session, some of you might say, you know what, Salman Saab, whatever you said, it's not making any sense. And I don't even know if you know what you're talking about or not, let's say, I might call it a humiliation, right? Maybe. But why should I? I should understand that why you are saying this, right? And reframe it. Maybe, just maybe, I'm not in a right mind frame, and I was not in a right tone that I was being understood, right?
So what I need to do, I need to create a restructuring mechanism, again, the cognitive restructuring that I mentioned earlier, that no, it's not humiliation, and I will just convert the scenario. What happened is that, it's always a psychological warfare, right? If someone attack you with words, you have always ability to change the ground, to change the, you know and I could say in retaliation that, I'm so sorry you feel that way, that I was unable to explain myself better. However, I'm just wondering that why you were so late to ask me this question. And then, so now what I'm doing, I'm coming in your comfort zone, right? I am coming in your arena. Okay. So you always, negate the attack on you and just, go with that. Okay. So we have one more raise hand. Akash Saab and Mr. Bilgarami sir. जी मैडम मेहना नाज ने बड़ी अच्छी बात से क्वेश्चन किया है, क्योंकि ये आप जो सिनेरियो बता रहे हैं वो हमारे सिनेरियो से बिल्कुल डिफरेंट है। राइट। क्या कि हमारा इमीडिएट बॉस सेशन जब भी कॉल करता है मीटिंग्स वगैरह एक्स्ट्रा एनी भी, तो वहाँ पर चाहे हम कितना भी काम कर रहे हैं, कभी कभार कोई छोटी सी मिस्टेक की वजह से सबके सामने हमें अच्छी खासी सुननी पड़ती है। अब Okay. वो सिचुएशन होती है जिसमें ना हम कुछ बोल सकते हैं, ना अपनी पोजीशन एक्सप्लेन कर सकते हैं। जितना बोलेंगे उतना फंसेंगे। तो Right. ये सिचुएशन किस तरह से डील करें? राइट। अच्छा, एक टेक्निक होती है, एक टूल किट होती है इन कम्युनिकेशन, वी कॉल इट डीफेसिंग द आर्गुमेंट्स। डीफेसिंग द आर्गुमेंट, कोई भी आर्गुमेंट आया उसको डीफेस कैसे करना है, राइट? हाउ यू चेंज इट, but that's part of the communication. Again, I mean, it's not covered in this course right now. I would love to share that with you, but I don't know if we would have liberty to explain it to you, or in what circumstances. So Mr. Bilgrami will be able to tell you, or he would be in a better position, or Mr. Furkan would be in a better position to say it. But yeah, there is a proper toolkit to it, and you can negate it. But I would need time to explain it. Okay. So I guess Bilgrami Sahab, you also raised hand. The reason I wanted to talk was is something similar to what Miss Sitara has posted in the chat. Mm-hmm. Where she is talking about controlling anger, fear, being a judge. Mm-hmm. So this we hear a lot about the judicial officers, judges, especially in the district courts. Right. Even more recently, it happened in Islamabad High Court, where CJ Saab was handed down. Pardon me for saying it so, but this is the reality of the matter. And this is done by several actors, uh, both within the legal system and outside. So, specifically talking about the courtroom scenario, if someone in the courtroom makes it so for the judge, uh, to feel something towards that, how he or she will maintain his or her irrationality towards. Now this is very, very important situation. So we have two questions, one from Miss Sitara and other from Mr. Abdul Shakur sir. Okay.
So I'll address first Ms. Sitara and what Mr. Bilgami has asked. The problem is that you know it's a very perplexed situation where you are unable to say something, where you are unable to express yourself, where you should not express yourself in a way. But I told you the communication is what you say is 8% of the communication. Your tonality is 38% of the communication. 52% communication, however, is your physiology, right? Whenever I'm taking a criticism, for instance, right? And as soon as you start talking and just look at my body language, and I'm just being closed, right? I'm just being closed and I'm just being defensive and I'm just looking here and there and I'm just looking at the people. You know what I'm doing? I am encouraging you to start giving me lecture and just keep it going, right? What a person can do, I know it takes a bit practice, but ideally speaking, how it happens is that you need to create rapid with your target audience. You know, let's say a witness, or let's say a lawyer who is you know, causing such situation, right? What you can do, you know, you can make rapid with the, you know, without giving the expression. For instance, having just eye contact. For instance, if someone is talking to me, and while the person is talking to me in person, and if I'm just looking back straight without blinking straight at the person, you know what will happen? After two statements, the person will rethink that what he or she is saying. So वो क्या बोल रहा है या क्या बोल रही है, वो खुद ही सोचते हुए मजबूर हो जाएगी सिर्फ मेरे सीधे देखने से. एंड आई एम जस्ट नॉट मेकिंग एनी एक्सप्रेशन, नॉट अ स्माइल, not a nod, nothing, having a poker face and just looking back. You know what you're doing? You are making someone giving this silent message that, you know, you sure what you're doing is right, without saying a word, you know, without saying a word. Okay. So you know, you have to you know, make yeah, look for the tools that you can use. For instance, you know, whenever you are writing, you know, or you using a pen, for instance, right? So if I am listening to you and I'm doing that, what it shows, right? I'm listening and I'm just doing that. You know, it shows that, you know, I'm perplexed right now. It shows that there's something going on with me that shouldn't be going on right now, right? Instead, you become calm. You become, you know, again, it takes mastery, it takes practice, and rule for it: fake it till you make it. If you have belief that whatever is coming from a third person is you know, would become irrelevant. And again, what's the key? You have to try it 41 times. You know, 41 times rapidly, and you will change your belief system, you know, related to that. And हम जिसको वो कहते हैं कि किसी चीज के ऊपर गुस्सा आना, तो मैं किसी की बेवकूफी वाली बात पे मैं क्यों गुस्सा हूं, यानी कि मैं किसी के कहने पे अपने आप को क्यों नुकसान पहुंचाऊं. I just imagine this, and I'll be in good hands. I just imagine this, that no way I'm putting myself in danger or in harm's way because of some irrational thought or irrational say. So this is one. Now, you know what Mr. Abdul Shakur has asked, that having so many disturbing or unhelpful thoughts is a normal human thing or it's a condition. No, it's a human thing, I would say. You know, normal and not normal, let's put these words aside, but it's a human thing. It's completely humane to have disturbing or unhelpful thoughts. But the question is not what thoughts are you having. The question is why you are having it. You know,
So there has to be something, there has to be some sort of seed in back of your subconscious that is causing them, right? So that has to be explained. Okay. Um, Sometimes when you are unable to express, unable to say things that or unable to explain things that you should have been in the first place, then it might be a loop in your subconscious. So hence it will make you go for it again and again and again. Ideally, there are a couple of exercises. Meditation is one exercise. There is another exercise that's called force field analysis. It's another exercise. We could have gone for it as well. So okay, so Miss Neelam has commented that we are judges, not dummy. Yeah, I completely agree with you, and you are judges and not dummy, and apparently it looks like that. The kind of body language what I try to explain over this channel of communication might have sound like that. However, um, when you go for the specificity that you don't need to show the biasness. Now this abstract word is a very, very important word. You cannot show biasness. And if I'm listening to the argument and if I'm smiling on something, right, maybe rhetorical, maybe not, I would be taking sides, right? So I know this job is very, very hard, and what you guys are doing, I cannot even express my feelings in words. That it's a tough situation, and one yardstick cannot be for all the cases and everyone. But like I said, not doing anything would not help. If you're doing same thing again and again, you're gonna get same results again and again. Hence, um, we should try to let ourselves get out of that situation, and again changing strategies. That's very, very important, right? So, Mr. Liam, I agree with you, to the extent. But like, we as a human, we have this thing, responsibility that we need to, keep on trying to. And again, it's helpful for you. It's helpful for you because, if you're not negating these thoughts, then it would be eventually, uh, God forbid, harmful for you guys, because your job is very, very stressful and it's very serious job. Okay, so Miss Sobia has asked that what can we do to shrug off the negative thoughts? Any exercise you recommend? Yes. Okay, so tomorrow I will, I'll try to squeeze in like 10 minutes at least for exercises. Okay, to get rid of negative thoughts tomorrow, inshallah. I will just include the exercise, but I have to like taper, steal 10 minutes in my lecture, and then I'll put it there. Right. Again, time is a constraint. These things are very helpful. I have changed people, changing their life like 180, but it needs time. It needs like lot of time. But like I said, it's magical. So I will definitely share, inshallah. So now, if things are clear, okay. One more chat. How to live in present and avoid predicting future either with positive thoughts or negative ones. Okay. Um, so it's a very valid question, and I usually get it. I get it a lot. One thing is that you just understand what you're going through, right? A very small, I'll just try to make it as short as possible. Um, that there was a priest, and he was going somewhere, and he saw a person. He was very perplexed, and उन्होंने पूछा कि तुम परेशान क्यों? तो उन्होंने कहा कि
एस्ट्रॉयड आ रहा है बाहर से, सैयारे से, सैयारा आ रहा है दुनिया की तरफ और वो दुनिया को तबाह कर देगा। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, तो कहने का तुम परेशान क्यों? तो कहने का वो दुनिया तबाह कर देगा इसलिए मैं परेशान हूँ। कहने का मुझे एक बात बताओ, ये जो सैयारा आ रहा है दुनिया की तरफ, ये जो एस्ट्रॉयड आ रहा है, ये क्या तुमने इसको इनविटेशन दी है? तुम्हारी वजह से आ रहा है इस दुनिया में? एंड ही वाज लाइक नो। तो उन्होंने सेकंड क्वेश्चन किया कि क्या तुमने कुछ ऐसा किया कि तुम्हारी वजह से वो इस तरफ राग़िब हुआ या इस तरफ आया? तो उन्होंने कहा नहीं। कहने का अच्छा ये बता दो कम से कम कि क्या तुम कुछ ऐसा कर सकते हो जिसकी वजह से ये दुनिया में ना आए, दुनिया तबाह ना हो? तो उन्होंने कहा नहीं। तो कहने का तुम्हें परेशान किस बात से हो? राइट? सो समटाइम्स देयर आर थिंग्स जिसके ऊपर हमने लीप ऑफ फेथ लेना होता है। व्हेन यू गो फॉर इट, देन यू स्टार्ट लिविंग अ लाइफ। वो रूमी कहता है ना कि मौत का जायका हर एक को चखना होता है, बट बहुत कम लोग होते हैं जो कि जिंदगी का जायका चख पाते हैं। राइट? इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल थॉट, वेरी ब्यूटिफुल थॉट। सो बट इंशाल्लाह ताला इसको हम टाइम टू टाइम कुछ कवर करते रहेंगे। Okay, so now back to the session. सेल्फ एनालिसिस तमाम हजरात से मेरी वो है कि इज इट क्लियर? अभी तक सो फार कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? The question mind frame, are they logical? Does it make any sense? Are they realistic? The thoughts that are coming towards you and on. No confusion. Perfect. Great. Okay. So another quote, that it's only after you have stepped outside your comfort zone that you begin to change, grow, and transform. Right? Again, रॉय टी बैनेट ने बहुत बहुत अच्छी बात की है। और अगेन मैं कहूँगा कि समंदर को कूजने में बंद कर दिया है। That only after you step outside of your comfort zone. So what you do is that, so if I ask you to do something different, something, uh, you know, something that you haven't done before, and you would be like, you know what, अगर ये मैं करूंगी या करूंगा तो ये होगा, तो ये होगा, तो ये होगा, तो मुझे ट्राई नहीं करना चाहिए। I was having a session with a very good session with Tony Robbins, right? Once, and he said a beautiful thing that has impacted a lot on my life, like a lot. And he said that um, if you try doing something, you might fail or you might go through, and if you won't try, you will definitely fail, right? So you need to make yourself understandable that you need to take step outside of your comfort zone. You need to just take a leap of faith, right? And you will see the magic that you are changing and you're growing, prospering, and transforming, right? So um, Miss Snowber said that agreed, because once out of comfort zone you face challenges. Yes, you do. Yeah, that's true. Whenever, yeah, you raise a very, very beautiful point, that whenever you step outside of your comfort zone, and you will fail the challenges, you will definitely do that. लेकिन हर चीज में challenge है. I mean, you step outside your home, there are numerous challenge, a lot of variables to account for, right? And like, and इसी वजह से that you said that there might be things that would not be up to you. So that's why I call it that you have to take a leap of faith with a positive mindset, with the certainty that, hey, I'm trying my best and things will get better and things will go good and it will be just a game-changing scenario, and so on and so forth. Okay, so one more question, that what is the first step
to get out of your comfort zone. Perfect. The first step is to ask yourself that am I satisfied with my situation, whatever condition is. So for instance, I'm a shy person, and I would only interact with the people who interact with me first, let's say, and it is keeping me back at, at the back bench. What I need to ask is that, Salman, are you satisfied with the condition you are having, being at the back bench? And if I say no, then my first step would be that I will try to focus on the very interesting topics or cues or statements whenever there is a conversation going on between two people. And for the starter, I will put what is coming in my mind, just for sake of doing it. And I know I would fail. I know I might fail one time or two time or three time or four time. Again, what failure is? Failure is a feedback. It's a feedback. It's failure is not failure itself, right? It's just a feedback. I might be fail. That's fine. कोई एग्जाम नहीं हो रहा कि मैं अगर फेल हो गया तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, and I'll try to interact with the person. So the first step is always a very smallest goal in your list, a very achievable goal, because ये जो छोटा गोल होता है, ये अचीवेबल होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ताकि आपको मोटिवेशन मिले। आप कभी भी, जब भी आप गोल सेट करें अपने लाइफ में, एक और इन्फॉर्मेशन, एक छोटा सा टिप दे रहा हूं, कभी भी वो हायर सेट का गोल मत सेट करें। एक होती है आपकी डेस्टिनेशन, दैट शुड बी हाईएस्ट as far as you want to think of, and एक होते हैं milestones. So your first milestone, your second milestone, your third milestone should be broken in small pieces or small chunks. That's very, very important. And yes, one more comment on the chat, that if you believe in yourself, you can do it. It is a gist of everything. ये हर चीज की चाशनी है कि यकीन आपका किसी भी चीज पे होता है तो आप वो चीज कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं एक छोटा सा पीस शेयर करूंगा, बट लेट्स फर्स्ट गो टू द असाइनमेंट्स एंड देन आई विल बी डन, एंड देन आई विल शेयर अ वेरी स्मॉल थिंग ऑन द बिलीफ सिस्टम, and then we'll be done with the lecture, right? Okay, so we have a small activity, okay? Okay, so Bilgrami sir, I'll come to your piece of information, but let's say let's go for activity 1. Okay, so I would want you to make, हमारे पास कितने लोग हैं इस वक्त जो हमारे we have 34 participants. I would want you to make a team of let's say 4 or 6 people, accordingly divide yourself, right? And I would want you to select any irrational belief from the list that we had in the last session, and just try to have a small debate session to make it so that we can convert it, right? So you should try to convert the same situation into a rational belief by debating. So one team, irrational belief, and then you debate to convert into a rational belief. So एक टीम का rational belief होगा, irrational belief होगा, वो दूसरी टीम उसके ऊपर डिबेट करेगी और उसको rational में कन्वर्ट करेगी, and vice versa. Can we have, let's say, 4 samples that would do for this activity? 4 participants or 6 participants, एक ग्रुप हो गया, 6 participants का दूसरा ग्रुप हो गया, right? और आपको irrational belief लेना है, ठीक है?
और वो इरेशनल बिलीफ जो है वो दूसरा ग्रुप उसको रैशनल बिलीफ में कन्वर्ट करेगा डिबेट से, एंड देन वाइस वर्सा. I am Mr. Kashif said Akash, Kashif, Ali Hassan, and Fahad. Perfect, right, Mr. Salman? Yeah, so they are group 1. Yeah, group 1. Right. And do we have the group 2? So Miss Ume Farwa, Miss Sonia, Miss Sobia, and Miss Sitara Kainat, and Miss Sabatar. This is the group 2. So हम दो के ऊपर हम वो कर लेते हैं, सिमुलेशन कर लेते हैं, so that you know everyone will understand the gist of it. But ideally speaking, if they were in some sort of you know a session after the class, they could interact. That would have been really helpful. But having said that, at least some you know we can draw the simulation over here. So group 1, I would want group 1 to select one irrational belief that group 2 is gonna convert the irrational belief into a rational belief, right? और कोशिश करें कि आपके केस स्टडी से ही आए, या आपके लाइक यू नो जो आपका I'm sure आप लोग के पास ड्यूरिंग द सेशन, ड्यूरिंग द कोर्ट हियरिंग आप लोग के पास आती होंगी ऐसी चीजें. उसमें से कुछ एक you can role play or ग्रुप 1 और ग्रुप 2 आप दोनों को अपने अपने टास्क समझ में आ गए हैं, राइट? अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हैं. सर ये रैशनल या रेशनल बिलीफ्स दोनों हो सकते हैं या एक? नहीं, irrational belief होना है और उसको फिर रैशनल में कन्वर्ट करना है. अच्छा, ये इरेशनल में कन्वर्ट करना है, प्रोज और कॉन्स में बताने हैं. हाँ, डिबेट से आप कन्वर्ट करेंगे ना उसको. irrational belief को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, हमने डिस्कस किया था ना लास्ट सेशन में. अभी टॉपिक बताना है आपको या वी कैन डिस्कस आवरसेल्व्स? Yeah, you can discuss yourself, Because but then after you know session you we would have will to. discuss by in our group we will discuss the topics and we'll choose any one of them Okay. with suggestion of all participants Okay. of our group, of our So okay, so seems like you know this activity, I was willing to have this activity in today's session, but what I'll do is that we'll take let's say 10 minutes, 5 minutes for each group in tomorrow's session. हम इसी को continuity में हम ले लेते हैं. And meanwhile, what you do is that again, task is you have to select the irrational belief, and then you know you would have to convert into a rational belief by the debate. You have to convert the same situation into a rational belief. Okay, you have to take the irrational situation and then you have to convert it into rational, right? So ye hai. And okay, so Miss Saba said that her internet connection was disconnected suddenly due to. Okay, so I'll repeat again. There are groups. Mr. Furkan has already elaborated that. You know, you have your groups. Rest of you, you know, if you can collaborate with each other or whatever, and then select any irrational belief or situation, and then you'd have to convert into a rational belief or situation, the first group, and the same thing should be done by the second group as well. No, you can write as well, right? You know, because we want to go for the argument here. Here, the words matter itself. I would not go for the physiology internality since you know we are not present in the same area. Otherwise, it would have been like really better. But we can go for the words, right, Miss Sobia? Perfect. Okay. So. Uh, that's it for today's session. I just hope that you try to
harness as much as possible for you. And मैंने शायद बिल्कुल जिसे कहते हैं कि I try to come on the on the level that I was being understood, क्योंकि हमारे पास थोड़ी सी वो होती है limitation होती है of the time, so there were a lot of interesting questions that were coming in, and I was really passionate to answer those questions. So लास्ट थिंग जो मैं बता रहा था यकीन के ऊपर, that is food for thought for today's session. And the food for thought is that, like I said, यकीन कोई भी चीज बदल सकती है, यकीन किसी भी चीज की हकीकत बदल सकती है, एंड सो सपोर्ट यकीन सर्टेनिटी. एक एग्जांपल आपको दूंगा मैं. द अदर डे I was trying to find an almond butter in my fridge, and I just opened the door, and I was like, I just scanned the entire fridge, by the way, like entire fridge, and there was no almond butter there. And I was like, Mom, there is no almond butter in the fridge. And she was like, it's right there. And I was like, okay. And I looked it again. There was no almond butter, there was no almond butter, and there was no almond butter. And I was like, you know what, Mom? There is no almond butter in the fridge. And all of a sudden, a magical finger just appeared right on the second shelf that, hey, here it is. And all of a sudden it was there. All of a sudden it was there. You know why it happened? My certainty that there is no almond butter in the fridge, I was so certainly negative on that I was unable to perceive the visual cue in my brain. क्योंकि मैंने आपको बताया था, इसको मैं यहां से कनेक्ट करता हूं. 10 मिलियन बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन आपके पास इनपुट आ रहा होता है और प्रोसेस 128 बिट्स होता है. तो ये आपके ब्रेन के ऊपर है कि कौन सी इंफॉर्मेशन उसने स्किप कर देनी है. Because of my certain thought, there is no almond butter in the fridge, it was gone. And my reality was it wasn't there, right? So that's food for thought. Yes, amazing. We see what we set out to see. So I couldn't agree with you more on this one. Amazing. So, you frame your life, you stencil your life, you choose your attributes and your properties, and your life becomes like that. So thank you so much, guys. Again, it's an honor among you. I'm also learning from you. Great session for me, for my learning experience. And I just hope that you like it as well, or you learn a thing or two from it. So, Mr. Furqan, I guess I'm done. So today's session is like,